क्या हुआ? चालू नहीं हुआ? So कैसे डिफाइन किया हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. ओके, अगर सिंगल फ्लावर है तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस. बट व्हाट इफ देयर इज अ होल bunch of flowers, guys? Okay, एक फ्लावर से पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, गुच्छा है. So now that will be called as which inflorescence? Grouped inflorescence. So there are two basic types. One is solitary, the other is grouped. As we have been told previously that the stalk of the flower, what is the stalk of the flower called? Pedicel. And the stalk of the inflorescence is called peduncle. क्या होता है उसको? Peduncle. So did you get the difference between the two words? One is pedicel and the other is peduncle. What is the pedicel? Stalk of the flower. It is the stalk of the flower. And what is the peduncle? Stalk of the plant. It is the stalk of the inflorescence. Okay? What did everybody? Yes. Yes or no? Yes. Now, the grouped inflorescence can be of two types. They are called racemose and cymose. कितने टाइप्स हैं? दो. कौन से? Racemose and cymose. Racemose and Cymose. cymose. Look at the racemose first. This is the peduncle. Okay? And this is the apical part of the peduncle with its bud. अब ये apical part, it continues to grow. So the peduncle will have a limited growth or an unlimited growth? Unlimited growth. As a result of which the younger flowers will be at the apex and the older flowers will be at the base. ये और ऊपर ग्रो होगा तो यहाँ पे कौन से फ्लावर्स होंगे? यंगर. नीचे कौन से फ्लावर्स होंगे? older. Such an arrangement of flowers will be called as acropetal succession. Younger are at the apex, older are at the base. Got it? If I make the peduncle flat like this, peduncle को क्या किया मैंने? एक flat arrange की, और ये flowers को circles में arrange किया. Then these smaller ones are the younger flowers and these are the older flowers. So tell me, the opening of the flowers will be from the center to the periphery or periphery to the center? कौन से flowers पहले open होंगे? Periphery वाले flowers पहले open होंगे कि center वाले flowers पहले होंगे? क्योंकि वो old है ना, तो older flowers पहले खिलेंगे ऐसे, बाद में younger खिलेंगे ना. So the opening will go from center to periphery or periphery to the center? Periphery to the center. Periphery to the center. So if I have a guच्छा of flowers showing racemose inflorescence, बाहर 5 flowers है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो कितने सर्कल्स हैं? 5 सर्कल्स हैं. हर एक सर्कल में कितने फ्लावर्स हैं? 5. पहले कौन सा वाला रो खुलेगा? सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट, फिर अंदर वाले खुलेंगे. Got my point? तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी है? कौन सी इन्फ्लोरेसेंस की? racemose inflorescence. So can we highlight the points? What is the first point? We'll say that the peduncle has unlimited growth. Why does the peduncle have an unlimited growth? Because the apical bud does not terminate, change into a flower. So how is the arrangement of the flowers?
They are in acropetal succession. Yes or no? Yes. And the opening of flowers is in a centripetal fashion. Understood racemose inflorescence, everyone? Yes. All the 4 points. What about the cymose inflorescence? See, the diagram will go like this. Who is the stalk of the inflorescence? Peduncle. But the apex got changed into a flower. So will the peduncle have limited growth or unlimited growth? So from the sides, do you see the axillary buds have grown into branches? And its apex got converted into what? A flower. Okay? So now tell me, what should I write over here? Peduncle has got limited growth. Second point, because apical bud gets terminated in the flower. Can I say old flowers are at the apex and the young flowers are towards the base? Such an arrangement is called as basipetal succession. Okay. Once again, if I make the thalamus peduncle flat, then सेंटर में कौन से फ्लावर्स होंगे ओल्ड पेरिफेरी में कौन से होंगे यंग तो पहले कौन खुलेगा सेंटर वाले फ्लावर्स so the opening will go from the center towards the periphery so this opening will be called as centrifugal opening yes centrifugal fashion understood last वाला पॉइंट समझा कि नहीं सबको यहाँ पे रेसिमोज में ओपनिंग कहां से कहां की तरफ जाएगी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फैशन में और यहाँ पे कैसे ओपनिंग होगी सेंटर टू द पेरिफेरी तो हम उसको क्या कहेंगे सेंट्रीपिटल फैशन आया समझ में सबको एवरीबॉडी ओके नेक्स्ट we'll begin our discussion with the fruits in angiosperms. And some basic things I've already told in the yesterday's lecture. That the carpel shows the presence of stigma, style and ovary. And inside the ovary, there is a nutritive tissue called placenta. And on the placenta there is ovule. Correct? Then you remember double fertilization? Yes. After double fertilization, this ovary will change into the fruit and the ovule will change into a seed. So this ovary, can I say, I'm sorry, इसको क्या लेबल दूँ मैं? Fruit. Can I say it is a ripened ovary? Ripened को अपन बोलते हैं पका हुआ. यहाँ पे इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद. और वही सीड को क्या कहेंगे हम लोग? सीड को हम लोग कहेंगे इट्स अ ripened ovule. बराबर है? So what is a fruit? It's a ripened ovary and a seed is a ripened ovule. Clear everybody? Okay. Now, in the structure of a fruit, remember the important thing is the fruit wall, which is called as the pericarp. Okay? So what is the outermost part of the fruit called? Pericarp. That is actually the fruit wall. Okay? Now this pericarp can either be of different types. It can be thick and fleshy. It can be thick and it can be dry. It can be thin as well as it can be soft. It can be thick as well as can be hard. Okay? So pericarp के अलग अलग क्या होते हैं बच्चों टाइप्स किसके अलग अलग टाइप्स होते हैं pericarp. Okay? Now I will talk about the pericarp which is thick
and fleshy. In the case of which fruit ho chalo? Mango. Okay. So in a typical mango, the outermost skin, if it is a raw mango, kacha mango, what will be the color of the skin? Green. If it is a ripe mango, what will the color? Yellow. And that skin is called the epicard. What do you call it? Epicard. And then you see that yellow juicy thing that we eat? Isn't it fleshy? And that is called as the mesocard. And the innermost part is hard and it is stony, which is called as the endocard. जिसको अपन मराठी में बोलते हैं बाटा, होता है ना बाटा, क्या बोलते हैं तुम लोग? कोई उसके अंदर होती है, वो जो हार्ड हार्ड रहता है, व्हाट डू यू कॉल इट? बाटा यू कॉल इट. एंडोकार्प तो नहीं बोलते हो ना घर में, एंडोकार्प बोलते हो. तो ये तीनों को मिलके बोलते हैं व्हाट डू कॉल इट? पेरिकार्प. नाउ व्हेन यू ब्रेक द एंडोकार्प, किसको ब्रेक किया हम लोगों ने? तो अंदर हम लोग को सीड मिलेगा और उसके पास दो क्या होंगे? कोटलीडॉन, जिसको आप कोई बोलते हो, अंदर वाला पार्ट ब्रेक करने के बाद. ओके, सो व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द पेरिकार्प? एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. All three together is called as the pericarp. Okay, in the case of coconut, okay, the mesocarp is fibrous. So if you look at understand this. If you look at a young coconut, the outermost green part will be the epicarp. So when you remove that epicarp layer, you have the fibers that will be called as the mesocarp. And that mesocarp commercially is also known as the coir of coconut. इसका कमर्शियल यूज होता है कॉयर. और अंदर जो कड़क कड़क जो नारियल है वो कौन है? एंडोकार्प. अब जब वो एंडोकार्प को हम लोग फोड़ते हैं तो जो पानी बाहर आता है और जो मलाई खाते हैं वो कौन है? एंडोस्पर्म. उसकी सीड की कौन है? एंडोस्पर्म. सो मलाई और पानी किसका पार्ट है? सीड का. तो नारियल के अंदर हम लोग नारियल का फ्रूट खाते हैं कि नारियल के फ्रूट के अंदर की सीड का पार्ट खाते हैं? कौन सा वाला पार्ट खाते हैं? एंडोस्पर्म. और वो तीन ऐसे ऊपर आंखें जैसे होती है, ऐसे दो आंख ऐसा दिखता है ना ऊपर, दैट इज द एम्ब्रियो. वहां उसके नीचे क्या है? एम्ब्रियो. दैट इज इफ यू कीप ऑन वाटरिंग दैट, वहां से एक नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है. व्हाट माय पॉइंट? Usually in Hindu homes you have a kalash. In that you keep that mango, you keep on watering it. So where does the new plant come from? The top. जहाँ पे वो तीन क्या होते हैं? होल्स होते हैं. I hope you are able to relate it to चलो. So in the case अभी समझा एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. So कोकोनट की केस में वो बाहर वाला ग्रीन कौन है? एपिकार्प. मिडिल वाला फाइब्रस कौन है? और अंदर वाला स्टोनी वाला पार्ट कौन है? तो मैंगो और कोकोनट में एक चीज कॉमन हो गई कि उनका एंडोकार्प कैसा रहता है बच्चों? स्टोनी रहता है. स्टोनी मतलब इट इज हार्ड. Did you follow everybody? Yes or no? Now also remember that a fruit is said to be a true fruit. What's a true fruit? A fruit which develops only from the ovary is called as a true fruit. वो फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से डेवलप होगा? ओवरी से. तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट. It's a fruit which develops only from the ovary. And if it develops from parts other than the ovary, if it develops from parts other than the ovary, then that fruit is called a false fruit.
मतलब अगर फ्रूट के डेवलपमेंट के टाइम पे ओवरी के अलावा भी किसी और ने पार्टिसिपेट किया तो हम लोग उस फ्रूट को क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट. A good example of a false fruit is apple. ये जो एप्पल हम लोग खाते हैं बच्चों, खाते हैं ना एप्पल तुम लोग? ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है जहाँ पे ऐसे सीड्स होते हैं ना ऐसे सीड्स, ये फ्रूट है. कौन है? फ्रूट. और जो तुम लोग चबा चबा के खाते हो ये वाला पार्ट, दैट इज द फ्लेशी थैलामस. Who is it? Fleshy thalamus. Alexa, so which part of the apple do we eat? Fleshy thalamus. Which part of the pear you eat? Fleshy thalamus. Which part of the strawberry do you eat? Fleshy thalamus. तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर देखो दाने दाने दिखते हैं, वो एक्चुअल फ्रूट है. और जो तुम चबा चबा के खाते हो वो क्या है? थैलामस है. सो पोम्स, एप्पल, देन स्ट्रॉबेरी, cashew nut. Have you seen a cashew nut tree with cashew nuts? Yes. That will be all what which look false fruits. Okay. Then the third type is what is called parthenocarpic fruits. Have you heard of these bachalo? Parthenocarpic fruits? Yes, Sakshi, what's it? Without fertilization. Without fertilization. So can we say they're seedless fruits? How are the fruits? Seedless fruits. They develop without fertilization. A good example of that would be the common fruit. You guys are famous for that. Sangli is famous for that. What? What banana? Sangli is not famous for banana. It is famous for grapes, isn't it? Yes. So grapes से seeds होते हैं? नहीं. So they are all which type of fruits? Parthenocarpic fruits. So how do they? मतलब how does the fruit become parthenocarpic? Without fertilization, the wall of the ovary will divide to form the fruit wall. What we do is we spray hormones like auxin and stimulate it so that it gets converted into a fruit cup wall. Got my point? So banana and grapes are coming under which fruits? Parthenocarpic fruits. Parthenocarpic मतलब seedless fruits. So in that fact, some students were asking me that banana को grapes को grow कैसे करते हैं? वो तो तुम लोग को मुझे बताना चाहिए. क्या करते हैं? पहले उसकी खाम लगाते हैं, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं. उसके नर्सरी से क्या बोलते हैं उसको मराठी में? वेल लेके आते हैं और उसको फिर ग्रो करते हैं. हो क्या नहीं? फिर एक और टाइप क्या लिखा है मैंने? dehiscent fruits and indehiscent fruits. Okay, what are the dehiscent fruits? When the fruit wall breaks to release the seeds, it's called the dehiscent fruit. जब फ्रूट का वॉल खुद ब खुद क्या होता है? ब्रेक होता है और सीड्स बाहर रिलीज होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? dehiscent. जैसे रेड चिल्ली है, उसको अगर हम लोग ऐसे रख देंगे तो ड्राई होते 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 क्या हो जाता है? फिर फट जाता है, उसमें से क्या बाहर आते हैं? सीड्स. देखो मैंगो के साथ भी वैसे होता है कि नहीं? हाँ, खुद गुटली बाहर आ जाती है उसकी. खुद ब खुद गुटली बाहर आती है, बोले खा ले मेरे को. हाँ, तो जब फ्रूट वॉल ब्रेक होता है मैच्योरिटी में तो उसको बोलते हैं डेहिसेंट. नहीं ब्रेक होता तो उसको बोलते हैं इनडेहिसेंट. समझा? फॉल्स फ्रूट, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, पार्थेनोकार्पिक. देखो बताइए ये कौन सा है तुम्हारा सांगली का दूसरा फेवरेट वाला प्लांट है? ब्रिंजल. ये क्या है? फ्रूट है कि वेजिटेबल है? फ्रूट है जिसको वेजिटेबल बोल के खाते हैं आप लोग. ओके, एंड ये कौन है? उसके सेपल्स है. So is it a true fruit or a false fruit? Because even the sepals are there participating with the formation of fruit. समझा यहाँ तक? चलो कॉपी करो फिर, जल्दी जल्दी कॉपी करो. राइट, क्या डिस्कस किया था सीड के बारे में? It is a ovule after fertilization develops into a seed. Okay.
A typical seed, ये सारे points देखो, shows the presence of a seed coat. The outer seed coat is called as the testa. The inner coat is called as the याद है? Then there is an embryo. Accordingly, it can either be a dicot embryo or a monocot embryo. You know, in a dicot embryo, I already told you about certain points like tigellum, embryo axis. पहला lecture होता है इसका. Hepticotyle, hypocotyle. देखो फर्स्ट पेज पे ही रहेगा. एपिकोटाइल के टिप को क्या कहते हैं? और हाइपोकोटाइल के टिप को क्या कहते हैं? So embryo axis, epicotyle, hypocotyle, lobule, and the right, Uchilo? Yes. Then endosperm. Last time बताया कैसे form होता है endosperm बताया था. One of the male gametes unites with the secondary nucleus, results in the formation of a triploid tissue, which is called as primary endosperm nucleus, and will form a triploid tissue, which is called as the endosperm. Endosperm is also known as albumin. What is it called? Albumin. Okay. Now there are two types of seeds which are classified as endospermic and a non-endospermic seed. What are the two types? Endospermic seed and a non-endospermic seed. Let us see. What is that? Endospermic seed. In an endospermic seed, the final seed will show the presence of an endosperm. So the endosperm is fleshy, whereas the embryo and its cotyledons, the cotyledons will be thin. खाना कहाँ पे स्टोर है? एंडोस्पर्म में. कोटिलोन्स कैसे है? थिन है. ऐसे सीड को क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में ये जो एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है. इसको कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म, जिसकी वजह से ये जो कोटिलीडॉन है that has become thick and fleshy, and endosperm पूरा consume हो गया. So मैं लिखूंगा endosperm got used up. So ऐसे final seed में endosperm दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा. तो ऐसे seed को हम लोग क्या कहेंगे? Non-endospermic seed. ये उसको बोलते हैं X albuminous seed, क्योंकि इसको कहेंगे albuminous. तो उसको क्या कहेंगे? X albuminous. आज समझ मेरी बात? Bean, pea are all albuminous. Castor is X albuminous. रहेगा याद इतना? पक्का? Then within the seed there is an embryo. Dicot embryo तो हम लोगों ने already पढ़ा है. पढ़ा है कि इसके पहले? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. वही कोटिलीडॉन, ट्यूब्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, वो सब बात. ठीक है. मोनोकॉट के एग्जांपल में उन्होंने मेज दिया है. Look at the diagram in the NCERT text. Okay. See there in the top corner diagram. They have mentioned it as structure of monocot seed of maize. Okay. What is the outermost layer they have called? Seed coat and fruit wall. दोनों को मिलके क्या है? Seed coat and fruit wall. Okay. Add one more word over there.
It is called hull. क्या बोलोगे इसको? Hull. It's a fusion of fruit wall and the seed coat. क्या mention? क्या mention किया? हल. बराबर है? अब हल के नीचे do you see a layer of cells? What is it? What it is labeled as? Neuron layer. Okay. Right over there, triploid, 3N. 3N. Neuron layer is 3N. Remember that in MCQs. That you mention a neuron layer as triploid. Or under. There will be what? Endostop. Okay. And alluron layer will also mention one point over there. It releases enzyme called alpha amylase that will help in the process of seed germination. मेंशन करो वहां पे पॉइंट कौन सा एंजाइम रिलीज करता है अल्फा अमाइलेज जो कौन सा प्रोसेस में हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन ओके तो हल है हल के नीचे कौन सा लेयर है एल्यूरोन लेयर है फिर अंदर कौन है एंडोस्पर्म then one thing is see that part which has been made labeled as scutellum Yes. okay उसको अंडरलाइन करो लिखो शील्ड शेप्ड कॉटिडॉन क्या मेंशन करोगे शील्ड शेप्ड कॉटिडॉन यस सोल्जा what did you like about it shield shaped what बचे लोग single cotyledon is called what scutellum what do you mean by shield guys shield मतलब ढाल ठीक है ना ढाल okay so shield shaped cotyledon is called scutellum that's something easy you have a radical and a plumule the radical is protected by coleorhiza and the plumule is protected by coleoptile so how many cotyledons are there a single cotyledon which is called as scutellum why is it called scutellum because it is shield shaped then radical and plumule radical protected by coleorhiza plumule protected by coleoptile coleoptile so let's go coleoptile simple clear everybody Yes. okay